Hello aspirants, I hope the preparation for UPSC CSE 2026 is on track. और जैसे कि आपको पता है कि we have come up with a new video lecture series which encompasses the various facets of the UPSC examination. तो चाहे आप beginner level पे हो, चाहे आप pro level पे हो, you can always revisit the series and you can go back to the basics, you can look for the strategies and then you can prepare well enough for this examination to ultimately crack it. So Nimbus Academy IAS is back with another video in this series that is focusing upon the essay part of the UPSC mains examination. So I am Manpreet Singh Mahal and let's proceed forward as to what the essay encompasses in the UPSC mains. तो सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन, इसको हमने काफ़ी अच्छे से बार बार डिस्कस कर लिया है कि हाउ द यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन लुक्स लाइक एंड हाउ दिस इज हैविंग अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी. तो जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जिसमें आपने 2+2 आवर्स के 2 पेपर देने हैं एंड देन you get the ticket for the mains examination. और mains examination में there will be paper A and paper B which will be qualifying in nature. ये इसको आपने सिर्फ qualify करना है और इसमें merit आपकी जो है consider नहीं की जाती है. So we have already seen that कि how there is paper A, then there is a paper B. Paper B यहाँ पे English का होता है and paper A basically has any one language from the 8th schedule, that is 22 languages. ठीक है, फिर उसके बाद the papers that are to be counted for merit. तो merit हमने already discuss किया है कि UPSC mains examination is basically of 1750 marks, जिसमें आपके 500 marks are basically for your optional subject, ठीक है, and बाकी के जो आपके 1250 marks होते हैं these are basically 250 plus 1000. So ये जो 1000 marks हैं GS 1, 2, 3, 4 और बाकी 250 marks, this basically has your essay component added to it. So the first one, the paper one, जिससे कि आपकी शुरुआत होती है मेंस एग्जामिनेशन की, that is your essay का पेपर and then you ultimately progress with GS1, GS2, GS3 and GS4. तो यूजुअली जो यूपीएससी का पैटर्न रहता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट डे of the mains examination is usually devoted to writing 2 essays. तो सबसे पहले जिससे आपकी शुरुआत होगी that is your essay and as they say well begin is half done. अगर आपने शुरुआत ही बहुत अच्छी कर ली है तो कहीं ना कहीं आप आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने की. So that is how much important the essay is with respect to the format of this examination. Now moving forward, as I said कि स्टार्टिंग किससे होती है, बिगिनिंग किससे होती है, दैट इज विद द essay पेपर. अब इसमें देखेंगे हम कि जब हम यूजुअली whenever the food is served we usually go with the starters, the soups etc. ठीक है, these are the starters. So if you get very good starters तो वो जो आपका पूरा मील होता है उसका स्वाद जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें और 4 चांद लग जाते हैं. So that is why essays are basically considered the starters. और 2024 जो कि अब तक का मोस्ट रीसेंट essay का पेपर रहा है उसको अगर हम एक बार स्टडी करें then we will see कि there are various sorts of topics. बहुत से टॉपिक्स हैं यहाँ पे ऐसे टॉपिक्स हैं जो लिटरेचर के साथ डील करेंगे, ऐसे टॉपिक्स हैं जो साइंस एंड टेक के साथ डील करेंगे, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट के साथ भी डील करेंगे एंड देन देयर आर फ्यू की एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द फिलोसॉफिकल एसेज. तो कैसे ये पैटर्न जो है एक बार चेंज हुआ है हमारा, उसको स्टडी करने के लिए वी नीड टू स्टडी कि व्हाट वाज देयर इन द 2024 एग्जामिनेशन, व्हाट वाज देयर इन 2022, 2019, 2015 एंड अल्टीमेटली 2013, because 2013 is somewhere where the entire pattern was drastically changed. तो वो सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे so that you know कि what goes into write good essays and how much this paper is relevant for making or considering the merit of this examination. So सबसे पहला ऐसे जो कि आप देखेंगे कि ऐसे पेपर में usually there are 2 sections and out of the 2 sections you will have to write 1 essay from each. तो 4 essays आपको options दिए जाते हैं. These are the 4 essays, this one being the section A and this one being the section B. So from the section A you will have to take out 1 essay and you will have to write it, and from the section B you will have to take out another essay and you will have to write it.
ठीक है, तो इस हिसाब से आपने ऐसे को प्रोसीड करना होता है। व्हाट इज गिवन इन द यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी क्या चाहता है ऐसे से वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली वी विल डिस्कस द टॉपिक्स एंड हाउ द टॉपिक्स हैव इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। ओके, सो दिस इज समवेयर रिलेटिंग टू द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट। यूएनसीसीडी के बारे में आप सबने पढ़ा हुआ है, दैट इज टू कॉम्बैट द डेजर्टिफिकेशन। तो फॉरेस्ट्स they are usually preceding the civilizations से पहले they were forest, but eventually after the civilizations were formed and after that what was there was the deserts. So forest को किस हिसाब से humanity ने destroy किया है and eventually the deserts have been formed. The next topic, the empires of the future will be the empires of the mind, कि rationality, scientific temper कैसे आपके जो future को guide करेगा. Then there is no path to happiness. Happiness is the path. That you cannot achieve happiness. That is not possible. But eventually, to be happy, that is completely your personal decision. So you will have to take that path. Rather, it is not a destination. Then the doubter is a true man of science. So over the period of time, there have been certain doubters. Okay, from times immortal, we have seen Plato, Socrates. ये सारे जो थे they were all doubters, ठीक है, that is how they were also the men of science. So not only the scientists such as Galileo, Isaac Newton, but rather the men who shook the empires, ठीक है, they were also the men of science and they were the doubters. So इसके ऊपर आपने एक पूरा essay को frame करना है. So out of these four you can choose any one and write the essay on it. Then there is social media is triggering fear of missing out, that is what you called FOMO. तो FOMO के ऊपर आपका जो है एक ऐसे पूछ लिया गया है, among the youth and precipitating depression and loneliness. So आप देखोगे कि how much this essay is relevant with respect to the present context. कि social media is all over the place. India is having one of the largest number of social media users all across the world. And don't you think that this is also in the mind of UPSC exam makers? So that is why they have emphasized on social media, they have emphasized on FOMO, they have emphasized on depression and loneliness. So that is how the essays are not only subject to the examination but also the subject of time. Time and space के साथ आपके essays जो हैं over the period of time evolve हो रहे हैं. Then nearly all men can stand adversity, but to test a man's character, give him power. Okay, so what you are vying for through the UPSC examination is another sort of bureaucratic power. So that power, once it comes to the man, it gives a test of his character. Okay, so nearly all men, they can stand out and in the adversities, they can, deal through the problems, but then if you want to really test a man's character, you need to give him power. Okay, so this is another essay which you can jot down or write. Then all ideas have large consequences are always simple. That is, simplicity is the ultimate sophistication. Okay? And the cost of being wrong is less than the cost of doing nothing. So वो कहते हैं ना कि you miss all the arrows or you miss all the shots you don't take. ठीक है? तो एक तो होता है कि you are doing something and you are doing it wrong, but then its cost is always less than what? Than cost of doing nothing at all. Okay, so these were the essays of 2024 and you had to write any 2 essays from these 8 topics, choosing one from both the sections. So that is how the 2024 paper looked like. अब देखेंगे 2013 से लेके 2022 तक के कैसे evolution हुई है. अब देखिए 2013 में और 2022 में eventually evolve होते गए हैं topics. ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे कि write 2 essays choosing one topic from each of the section A and B in about 1000 to 1200 words. ठीक है, so this is an essay part from your 2022. So 2022 का ये जो है section A था. 2022 का section A अगर आप देखोगे then forests are the best case studies for economic excellence, and again environment and ecology. ठीक है, environment and ecology plus geography, यहाँ से ये ऐसे आया. Then poets are the unacknowledged legislators of the world. So कहीं ना कहीं this topic is from the literature also and you can encompass the various dimensions. Then there is history is a series of victories won by a scientific man over the romantic man. So again scientific man, scientific में क्या आएगा, हमारा rationalism होगा.
ठीक है. So it will be rationalism versus romanticism. ठीक है. Then a ship in the harbor is safe, but that is not what ships are for. Another sort of, you can say, a philosophical essay. So this is what the 2022 section A looked like. Now moving a little forward, 2015 में section A और section B क्या थे? 2015 में section A was lending hands to someone is better than giving a dole. Another philosophical essay. Then quick but steady wins the race. Philosophical essay. Character of an institution is reflected in its leader. कहीं ना कहीं philosophical bent है, but it will test your leadership qualities. Then it wants to test you as to how much leadership instinct you are having in your writing skills. ठीक है. Then education without values is as useful as it is, seems rather to make a man more clever devil. So अगर education में आप values को नहीं लेकर आओगे तो it will make a man devil. ठीक है. It will take the humanity out of them. So this is what they have asked in the section A of 2015. 1100 से 1200 वर्ड्स में आपने ये essays को लिखना है. Then in the section B you had technology cannot replace manpower. Okay, so it is technology versus manpower present context scenario में. Then crisis faced in India, moral or economic. So crisis of values, crisis, moral crisis है या economic crisis है. So this was another topic. Then dreams which should not let India sleep. Another beautiful essay which was also written by many of the toppers, the dreams which should not let India sleep. कौन कौन से ऐसे सपने हैं जो भारतवर्ष को सोने नहीं देंगे. So as Dr. APJ Abdul Kalam said, dreams are not what you see when you sleep. Dreams are the ones which don't let you sleep. So भारतवर्ष के ऐसे कौन से सपने हैं. Then can capitalism bring inclusive growth? So inclusive growth as a topic you see in General Studies 3 also. ठीक है. So capitalism is also mentioned in your GS1 syllabus. So capitalism और inclusive growth को इकट्ठा कर दिया गया है यहाँ पे. तो कहीं ना कहीं ये आपका 360 डिग्री जो डायमेंशन है आपका GS का चाहता है, and the examiner wants you to write on these lines. So these were the topics from 2015. Now going forward 2019 में कैसे चेंज आया. अब देखिए wisdom finds truth, philosophical essay, very philosophical, कि wisdom जो है it finds truth, विवेक सत्य को खोज निकालता है. तो विवेक हमेशा सत्य को खोज निकालता है. Then values are not what humanity is but what humanity ought to be. So you can see here कि values के ऊपर काफी ज्यादा emphasis बार जो UPSC है कर रही है. Moral values, crisis of economic values, ये सारी चीजें. Then values are always emphasized by UPSC. Then best for an individual is not necessarily the best for society. ठीक है. So this essay you will see कि this essay was also there in 2013 paper और 2019 के पेपर में this was again repeated. So there is a repetition also, repetition of the topics such as the values. Then there is repetition of the themes such as the philosophical essays. ठीक है. Then there is repetition with respect to the direct essay topics को ही सीधा का सीधा repeat कर दिया गया है. Then courage to accept and dedication to improve are the two keys to success. So two keys to success are courage to accept and dedication to improve. कि सबसे पहले हम उसको accept करें कि हमसे गलतियां हुई हैं. ठीक है. And after that we dedicate ourselves in order to improve on these mistakes and eventually we will make our ladder to the success. So that is what this essay is all about. Then section B, South Asian societies are woven not around the state but around their plural cultures and plural identities. So again South Asian society, so something that is with respect to a cultural domain में ये जो है ऐसे ज्यादा delve कर रहा है. Then neglect of primary health care and education in India are the reasons for its backwardness. Again you need to give a social angle to this essay. So this is an essay that is based on the society theme or the social themes. Then biased media is a real threat to Indian democracy. Then another media which is called the fourth pillar of democracy. Then it is somewhere inclining towards your polity ka theme. ठीक है. And then rise of artificial intelligence, the threat of jobless future
or better job opportunities through reskilling and upskilling. So we will see here again we have artificial intelligence, so a theme that is basically dealing with the technology. So अभी हमने पिछले स्लाइड में ही एक बार देखा था कि there was an essay which was dealing with the joblessness. So कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और ह्यूमन काइंड को वो कंपेयर कर रहा था कि टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस द मैन पावर, और यहां पे अगेन वी हैव कम टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दीज आर द ऑफ्टन रिपीटेड थीम्स. ठीक है, आगे आगे यूपीएससी यू विल सी कि दे हैव रिपीटेड द थीम्स, दे हैव रिपीटेड द एसेज, एंड समवेयर they always drop hints कि what the next year essays will look like. Now see here 2022 सेक्शन ए हमने डिस्कस कर लिया था. सेक्शन बी में देखिए टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग ब्राइट. ठीक है, तो अपनी छत को, जिसे कहते हैं छत मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो. देन अगेन यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस, और यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर. दैट इज कि टाइम एंड टाइड जो है इंसान को हमेशा बदलता रहता है. ठीक है, सो what you are today, you might not be the same person tomorrow. You will not be the same person tomorrow because you will be chiseled by your experiences. That is what this essay wants to reflect upon. Then again, the smile is a chosen vehicle for all the ambiguities. वो कहते हैं ना, smile is the curve which puts everything straight. ठीक है, so smile is the chosen vehicle for all the ambiguities. अब you will see कि हमने एक ऐसे किसी पेपर का ये भी डिस्कस किया था कि हैप्पीनेस का कोई रास्ता नहीं है, हैप्पीनेस ही रास्ता है. सो सिमिलरली द एसे हियर इज स्माइल इज अ चोजन व्हीकल फॉर ऑल द एम्बिग्यूटीज. सो समवेयर इंटररिलेटेड एसेस. देन अगेन जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डजंट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट. सो हमेशा अगर आपके पास चॉइस है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो चॉइसेस हैं वो सही ही होंगी. So this is another philosophical essay. So over the period of time, we will see that the UPSC is repeating the themes. Themes repeat हो रही है, happiness की theme repeat हो रही है, values की theme repeat हो रही है, individual versus society की theme repeat हो रही है. So over the period of time, UPSC is not only delving into the philosophical essays जो हैं हमारे बढ़ गए हैं, but also the themes are often getting repeated. ठीक है, सो दैट इज हाउ दैट बिकम्स ए bulwark as to how you can prepare well for this essay part of the examination. So इस हिसाब से आपने इन चीजों को एनालाइज करना है, इनको ब्रेक डाउन करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली. सो व्हाट डज यूपीएससी से? यूपीएससी कहता क्या है एसे के विद रिस्पेक्ट टू? यूपीएससी चाह क्या रहा है आपसे? सो इट डजंट ओनली वांट यू टू write 2 essays of 1100 to 1200 words. ठीक है, ये तो आपकी होगी वर्ड लिमिट. This is one basic aspect which they want you to address. But what else do they want you to do? For essay, this is what I've taken directly from the UPSC official notification. They want candidates may be required to write essays on multiple topics. So multiple topics, as you have seen, they will be expected to keep closely important to the subject of the essay, to arrange the ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. So as you can see, the essays, the themes are repeated, but the themes are very varied. बहुत सारी आपको multidimensionality in themes में मिलेगी. ठीक है, for example, if you are writing on any topic, for example, if you are writing on the ship वाला topic, कि the ship in the harbor is safe, but that is not what ships are for. So you can give it any dimension, कोई भी dimension इसको आप दे सकते हो. But at the end of day, you will have to bear it in your mind that UPSC wants you to keep closely to the subject of the essay. कि आपने उसके जो आपका जो subject है, आप उसको कोई भी pointer दे दो, लेकिन you will have to keep very close to the subject. आप बहुत ज्यादा इधर उधर भटक नहीं सकते. Then it also wants you to not only give the points which are close to the topic, but also you will have to arrange them in an orderly fashion. क्योंकि जब आप points दोगे, very dimension दोगे which are very close to the topic, you have to arrange them in an orderly fashion
तो उससे आपका क्या निकल कर सामने आएगा, यू विल राइट कंसाइसली फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जैक्ट एंड द इफेक्टिव एक्सप्रेशन। तो ऑर्डरली जब आप अपने पॉइंट्स को यू विल कीप वेरी क्लोज टू द टॉपिक, देन यू विल राइट इन orderly fashion, then you can give an effective and exact impression or the expression to the examiner. That is what the UPSC wants you to do in the essay paper. So 1100 से 1200 वर्ड में आपने आप इस essay को लिखना होता है। और essay basically होना क्या चाहिए, essay is nothing but the same what you write in the GS papers. GS पेपर में जैसे आप किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, after that you go to the body of the question, and then you write the conclusion. So that is what holds true for the essay also. So for the essay, सबसे पहले you will have to choose the topic. So एक सेक्शन से एक टॉपिक आपने चूज करना है, and you should know कि ये टॉपिक मेरे को लग रहा है कि इसमें से मैं 1100 से 1200 वर्ड में अपने पॉइंट्स को लिख सकता हूं या लिख सकती हूं. So then you will choose that topic. Nextly, आप क्या करोगे, in the essay you will have to give a framework. सबसे पहले ऐसे आप अगर 1100 से 1200 वर्ड, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग द GSK answers can be of 150 words or they can be of the 250 words. ठीक है, but when you are going for an essay it is 1100 to 1200 words. So somewhere you can see कि 5 या 6 गुना लंबा है आपका ऐसे. So you will have to make a framework. आपको रफ पेजेस पे जाना पड़ेगा, पीछे आपने जो रफ पेजेस आपको दिए होते हैं क्वेश्चन बुकलेट्स के साथ. Then you will have to make a framework कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा या लिखूंगी, मैं बॉडी में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करूंगा या करूंगी, एंड आफ्टर दैट हाउ विल आई कंक्लूड. सो दैट विल गिव अ exact framework. And the third thing, you have to come back and write. So choosing an essay you can take about 5 minutes. Making the framework you can 10 to 15 minutes per essay. ठीक है, and then the rest of the time can be utilized for writing the essay. ठीक है, so this is how you need to approach the essay examination in general. उसके बाद what are the hallmarks of good essay? So हमने ये देख लिया कि essays कैसे कैसे आए हैं over the period of time, किस हिसाब से थीम जो है रिपीट हुई हैं. उसके बाद हमने ये देख लिया कि यूपीएससी क्या चाह रहा है कि आप उन थीम्स को कैसे अप्रोच करो. देन वी विल हैव टू सी कि हॉलमार्क्स ऑफ गुड ऐसे क्या है, कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं अगर आप ऐसे में वो लेकर आते हैं, देन यू विल बी गिवन गुड मार्क्स फॉर द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन एज द यूपीएससी नोटिफिकेशन सेड. सो द फर्स्ट वन इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपके ऐसे में. सो इट इज नॉट लाइक कि अगर आपको कोई सोशल टॉपिक दिया गया है तो आप उसमें एथिकल बेंट ऑफ माइंड ना लिखें. सो इट शुड बी हैविंग डाइवर्सिटी. योर जीएस का सिलेबस डाइवर्सिटी आपकी कहां से आएगी? योर डाइवर्सिटी विल कम फ्रॉम योर जीएस सिलेबस. वहां से आपकी डाइवर्सिटी आएगी. फॉर एग्जाम्पल जीएस के सिलेबस में you are reading about history, you are reading society, you are reading geography. That is in the paper 1. And in the paper 2 you are going for polity, then you are going for IR, you are going for governance. In paper 3 you are going for economy, you are going for internal security, you are going for disaster management, you are going for environment. ठीक है, and in the paper 4 you are having the ethical dimension. सो यहां से जो आपकी ये सारी डाइवर्सिटी है ये निकल के आनी चाहिए आपके ऐसे. सो दैट इज फ्रॉम वेयर यू विल गेट द कंटेंट फॉर द ऐसे. देन देयर शुड बी कनेक्टिविटी. सबसे पहले आप डाइवर्सिटी लेकर आओगे, अलग अलग पॉइंट्स लेकर आओगे, बट देन यू विल हैव टू कनेक्ट देम. यू विल हैव टू कनेक्ट दोज पॉइंट्स. उसके लिए कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल देयर आर फ्यू कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक however, concluding. So leave concluding, however, similarly. These are some of the
connecting words. We will see more connecting words in the next slide. Then you will have to choose a very simple language. यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा जिसे कह देते हैं रॉकेट साइंस लेकर नहीं आनी है. यू विल हैव टू कीप अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि अक्सर कई स्टूडेंट्स का ये एक मुद्दा रहता है कि सर जो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए वो लैंग्वेज कितनी कर तगड़ी होनी चाहिए. सो द लैंग्वेज that should be used in the essay paper should be the same language or the English language which you are using for the communicating with other people. So it should be very simple. So as I say that simplicity is the ultimate sophistication. That is where the simplicity comes into play. So you will have to keep the language as simple and as straightforward as it can be. So now going forward, for example, if you have to write an essay on good for an individual is not necessarily good for society. इसके ऊपर अगर आपने ऐसे लिखना है जो कि एक आपका टॉपिक आया भी हुआ है ऐसे इसमें, सो व्हाट विल बी द अप्रोच. सबसे पहले एज आई टोल्ड यू ऐसे के अलग अलग पार्ट्स होने चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. सो यू शुड नो व्हाट यू आर टू गोइंग टू राइट इन द इंट्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल इन द इंट्रोडक्शन हियर यू कैन स्टार्ट विद अ स्टोरी. आप स्टोरी के साथ शुरू कर सकते हो. यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ फॉर एग्जांपल अडोल्फ हिटलर. So what Adolf Hitler did in Germany before the Second World War, that he felt was good for him. But for society at large, what he did to the Jews or what he did in Germany at large, that was not good for the entire society. So you can start from there, how he did the mass persecution of the Jews and everything. So that is a black chapter in the history of humankind. So what he felt was good for himself was not good for the society. Then you can come back to the topic. So that is how you can hook the attention of the examiner. ऐसे एक तरह से आपका इस हिसाब से फ्लो होना चाहिए कि for example an examiner is sitting somewhere, okay, he comes across your sheet, you hook the attention of the examiner. Introduction should be such kind of कि आपकी जो examiner की attention एकदम से ऐसे के ऊपर आ जाए. Then you make the essay flow. आप अपने अपने अलग अलग आइडियाज जो हैं एग्जामिनर को बता रहे हो और एग्जामिनर इज फ्लोइंग विद द एसे. देन यू कंक्लूड द एसे इन अ स्पेसिफिक मैनर एंड यू लीव द एग्जामिनर विद द क्वेश्चन और वेयर एवर द एग्जामिनर वाज बिफोर रीडिंग योर एसे. सो दैट इज हाउ योर एसे शुड फ्लो. दैट इज हाउ द गुड एसे लुक्स लाइक. अब बॉडी पार्ट में अगर हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि what should be there, what can be there in the introduction. For example, Adolf Hitler, it should be short and crisp. Short and crisp से मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि एक पेज से ऊपर नहीं होना चाहिए. Introduction should not be exceeding more than that. Then what should be the approach? आप points कहाँ से generate कर सकते हैं? Points generation के लिए आपके पास एक approach होता है, that is pestle approach. Pestle approach में is nothing but pestle is political, then economic, social, technological, legal and ethical. So these are the aspects of the syllabus जहां से आप points को generate कर सकते हो. For example, you can generate the points from the social dimension. Social dimension से आप points को generate कर सकते हो कि patriarchy कैसे society में आई. Patriarchy because men thought that it is good for them. But patriarchy, by the virtue of patriarchy, they started controlling the other gender. So it was not necessarily good for the society at large. Okay. So that is why patriarchy needs to be challenged. So that is how you can generate the points. So not only from the pestle approach, you can also take the individual approach here. Individual approach में आप कैसे लिख सकते हैं? For example, you can take the case of Adolf Hitler. Then in the beginning, you can take from the history Ashoka. Kalinga war, he went for the Kalinga war and he thought it was good for him. The conquest was good for him. But eventually it was not good for the society. It led to the mass bloodshed. And eventually he adopted Dhamma, which was good for the society at large. Okay. So that is how you can take the individual approach also. कि बहुत सारे individuals आप ला सकते हैं from the ancient history to the present contemporary world. And how humans are, evolving over the period of time with respect to this topic. ओके बट उसमें थोड़ा सा आपको कनेक्टिविटी जो है बिठानी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है. देन यू कैन ऑल्सो टेक द एसडीजी अप्रोच. बाय द एसडीजी अप्रोच यू नो कि देयर आर
17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप एक सीक्वेंस के साथ इस ऐसे को फ्लो करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन। इस हिसाब से आप हर एक एसडीजी को ले सकते हो, उसमें से आप एक रेलेवेंट एग्जांपल उठा सकते हो, वो रेलेवेंट एग्जांपल के साथ अपनी बात को रख सकते हो। सो एसे इज नथिंग बट प्रूविंग योर पॉइंट बाय एग्जाम्पलीफाइंग इट। एग्जाम्पल के साथ अपने अपने पॉइंट को आपने प्रूव करना है टू द एग्जामिनर। एंड हाउ शुड द एसे फ्लो? एसे को फ्लो करने के लिए, एज आई टोल्ड यू, देयर शुड बी अ फ्यू कनेक्टिंग वर्ड्स। सो यू कैन जस्ट टेक अ नोट ऑफ दीज कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? फर्दरमोर, moreover, nonetheless, in addition, for example, despite, similarly, on the other hand, therefore, consequently. So these are nothing but your connecting words कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में अपने स्विच कैसे करना है। So because you cannot write the essay in one single paragraph, एक पूरे पैराग्राफ में आप ऐसे को नहीं लिख सकते हो। You will have to break down those paragraphs। एक पेज के ऊपर आपके 2 या 3 पैराग्राफ नजर आने चाहिए एग्जामिनर। सो दैट आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ वेरी गुड एसे। सो दैट इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इंडिविजुअल एसेज। ओके, देन हाउ मच टू प्रैक्टिस। मतलब स्टूडेंट्स कई बार ये चीज पूछते हैं कि सर कितनी प्रैक्टिस चाहिए एसेज की। सी, द प्रैक्टिस का कोई भी और सब्स्टिट्यूट नहीं है। First thing, bear it in your mind when you're stepping into this UPSC journey. Just write down this quote on your study table or wherever you feel like that practice makes a man perfect. So practice का कोई substitute नहीं है। For essay paper, for GS 1, 2, 3, 4, for any paper or the optional paper, you will have to practice a lot. Okay? तो अगर अभी तक आपने essays नहीं लिखे हैं और आपका थोड़ा सा GS का syllabus हो चुका है, then it is better that you take a pen and a page and you start writing the essays and get them evaluated by your teachers. So that is how you can progress with respect to the essays. Practice also varies individually. For example, you can have friends who have done honors in the English language. They have been writing the essays throughout their graduation. Okay, but you won't be at the same page with them. There might be people who might be writing diaries since childhood. So they are, in a habit of making things flow when they write. So you will have to come at the level of those people. So that is where the practice comes handy. So you will have to practice the essays, you will have to practice the diary writing, you have to practice everything. So then practice makes a man perfect, and it will vary individual to individual. Individual से individually आपकी जो है चीज vary करेगी. So practice, practice and practice. Then you can't simply write. You cannot simply write. For writing, you should have a prior knowledge. आपके पास information होनी चाहिए, knowledge होनी चाहिए, आपके पास wisdom होनी चाहिए. So information when put practically, that is knowledge, and knowledge when it manifests practically, when it is in your mind, that is wisdom. So not only you have to write, but rather you have to read good. This is because a good reader makes a good writer. So आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा आपके शब्द essays में निकल कर आएंगे. Now where you can read from, one of the source can be your newspapers. So newspaper में आप देखेंगे from the Indian Express और from the Hindu, जब आप editorials को पढ़ेंगे, you won't see the breakage in their flows. Okay, that is what you can learn from there. For example, this is an article, how free is a free speech? Discourse must be shaped by consistent legal principles, not selective outrage. So this was written by a teacher from Jamia Hamdard. ठीक है, law teacher from Jamia Hamdard. So he has written about Article 19 and how it manifests in the society. So once you read this article, you will know that how much the writer has made the article flow in a particular direction. आप कैसे वो आर्टिकल को फ्लो करवा सकते हो, ठीक है. एंड देन यू विल सी, फॉर एग्जांपल, दीज आर द कनेक्टिंग वर्ड्स, हाउएवर. सो दिस इज हाउ you will learn a lot when you are reading newspapers or when you are reading the editorials. ओके, सो इस हिसाब से आपने essays को ना सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बट यू विल हैव टू रीड वेरी गुड, you will have to read very good literature, and then you will
सबकॉन्शियसली इनकॉर्पोरेट एवरीथिंग। सबकॉन्शियसली आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आप जो है अच्छे एसेज को लिख सकते हो और अपनी राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। सो दैट इज हाउ अ गुड रीडर मेक्स अ गुड राइटर। अब ऐसे की रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है कि सर आपने सारी कहानी तो बता दी, बट आर द essays really important with respect to UPSC examination? Then I will give you a practical proof of it. So bulwark, अब देखिए सबसे पहले हमने डिस्कस किया मेंस में आपके कितने पे टोटल मार्क्स हैं 1750। अब 1750 में से बिलीव मी essay, ethics and optional, that is 250 plus 250 plus 500, that is 1000 marks. These 1000 marks, they ensure whether you are getting selected or rejected. आप रिकमेंड होंगे या नहीं होंगे, ये 1000 मार्क्स आपके डिसाइड करते हैं. If you are scoring anywhere around 120 to 113 essay and ethics, that is considered a very good score, because it is very difficult to take such scores in GS 1, 2, 3. GS 1, 2, 3 में ये scores लाना बहुत मुश्किल हो जाता है. But in optional also, if you are scoring around 260, 270, then it is also considered a good score. तो ये कुछ scores हैं, अगर आप कहीं ना कहीं इन scores में होवर करते हो जाके, अगर आपके marks they are around 500, 550 marks, अगर आप ये तीनों में ले लेते हो, then you have a very good chance of getting selected. Okay, so now see, I have uploaded the mark sheets of a few toppers here. सबसे पहले इशिता किशोर, ऑल इंडिया रैंक 1 प्रीवियस ईयर, 137 मार्क्स इन ऐसे, 137 नंबर है इनके ऐसे में, ठीक है. देन इन GS4 शी वाज हैविंग 112, इवेंचुअली इन ऑप्शनल 147 एंड 166. सो रिटन का टोटल वाज समवेयर अराउंड 900 मार्क्स. सो दैट इज हाउ essay ensured her selection. 137 marks in essay, very good score. Eventually, if you come to this year's topper, Shrimati Shakti Dubey, then what you see here, that Miss Shakti Dubey, she could score only 100 marks in the essay this year. So this is because essay की इस बार जो आपकी चेकिंग हुई है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है. So 100 marks she could score in essay, but then you will see कि she was over to pull it up in her GS4 with 141 marks. तो कहीं ना कहीं वो जो थोड़ी सी कमी बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट चेकिंग आपकी ऐसे में रहेगी, शी वॉज एबल टू compensate for it through her GS4 paper. So that is how essay, ethics and optional will ensure your selection. So essay जो कि आपका स्टार्टर ही होता है, उस टाइम आप एक फ्री माइंड के साथ पेपर लिखने जाते हो, पहले दिन आप मेंस का पेपर लिखने जाते हो, देन उस फ्री माइंड के साथ अगर अपने आइडियाज को भी फ्री फ्लो करवा पाते हो बाय द यूज ऑफ एडिक्वेट कनेक्टिंग वर्ड्स, एंड यू कैन मेक द एग्जामिनर, you can leave an everlasting impression on them, then believe me, you will see wonders in your result also. So that is how much the essay is important for your final selection in the UPSC. So सबसे पहले इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे essays they have evolved over the period of time. फिर उसके बाद हमने देखा कि what UPSC expects you, कि आप एक्सपेक्टेशन क्या है यूपीएससी की, क्या चाहती है आपसे ऐसे में. उसके बाद we saw कि what an essay should look like, how much preparation is required for that essay, and then eventually we saw कि किस हिसाब से a good reader makes a good writer. Then we saw the relative importance of the essay in this overall examination process. So now you know how much essay is important. So that is all from this video. ठीक है, इस वीडियो में हमने essay के बारे में आपसे डिस्कशन करनी थी. So I hope your doubts with respect to the essays are cleared by now, and if you have still got any doubts, then you can always connect to us through nimbus.ies on Instagram, then Nimbus Academy HSRIES, that is our Telegram page, and Nimbus Academy is our app on App Store or Google Store, and you can also subscribe to the channel for more such enriching content, that is Nimbus Academy IAS on YouTube. So for such enriching content,
and for such UPSC relevant content please stay connected to us through these handles. और ये वीडियो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए who are in the nascent phases of their preparation, जिनको ऐसे के बारे में इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, या उन फ्रेंड्स के साथ who are also there who are preparing for the mains this year. So if we can be of any help, then we will be more than happy. So please stay connected to Nimbus Academy IAS, and we will soon be coming up with another video in the series. Thank you so much. Shabba Khair. All the very best.